Hello everyone, this question appears in class 6 NCERT chapter of decimal. This is fifth question of its exercise 8.5. So the question says that Naresh walked 2 km 35 meter in the morning and 1 km 7 meter in the evening. How much distance did he walk in all? So हमें given है distance walked by Naresh in the morning, given है 2 km 35 मीटर से हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में. सो हो जाएगा 2 प्लस 35 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. सो हो जाएगा 2 प्लस 0.035 इज इक्वल टू 0. हो जाएगा हमारा 2.035 किलोमीटर. नेक्स्ट, डिस्टेंस walked by Naresh in the evening. यह हमें गिवन है 1 किलोमीटर 7 मीटर. सभी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 किलोमीटर प्लस 7 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. सो हो जाएगा 1 प्लस 0.007 is equal to 1.007 kilometer. So हमें find out करना है how much distance did he walk in all. So total distance walked by Naresh is equal to 2.035 plus 1.007. So 7 plus 5 12, 1 carry, 1 plus 3 4, 0, 2 plus 1 3. So 3.042 kilometer. So total distance walked by Naresh is 3.042 kilometer. Thank you.